Hello, my dear students. Let us study about critically examine or critically analyze the Austin's command theory of law. ऑस्टिन के आधे सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें. So, my dear friends, I would like to introduce first about it. The analytical positivist school, led by John Austin and later refined by L. H. L. A. Hart, explains law as it is, not as it ought to be. यानी कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के अनुसार कानून को जैसा है वैसा समझना चाहिए, न कि जैसे होना चाहिए. Therefore, friend, Austin's command theory is one of the earliest systematic attempt to define law in strict positivist terms. ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत कानून के वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी व्याख्या का प्रारंभिक प्रयास है. Now, what Austin is going to say, friend? Austin command theory, it means that as per the Austin, John Austin says that law is the command of the sovereign backed by sanction. Therefore, you always remember law is command by a sovereign backed by sanction. Therefore, friend, what it means that कानून प्रभु का आदेश है जो दंड द्वारा समर्थित होता है. Therefore, friends, I will go in detail meaning and explanation of this statement. What exactly is this? इसका अर्थ और व्याख्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. According to John Austin, law is not based on morality, justice, or customs, but on authority and power. It means that Austin already denied the natural law. ऑस्टिन के अनुसार कानून नैतिकता या न्याय पर नहीं बल्कि शक्ति और अधिकार पर आधारित होता है. Therefore, what he says that laws exist when a superior sovereign gives a command. जो सार्वभौम है वो कमांड देता है. People are obliged to obey. People are obliged to obey. There is a sanction punishment for disobedience. That is what we are here. जब संप्रभु आदेश देता है और उल्लंघन पर दंड होता है तभी वो कानून होता है. It is a very clear cut. You might have understood. Now, what even in these particular things, I would like to give more details. Now, what is command actually? Command, adesh, as per the Austin. A command is an expression of desire by a superior that others must follow. It is not advice or request. It creates duty, kartavya. For example, do not steal, criminal law. चोरी मत करो, आपराधिक कानून है. ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है. इसके लिए कोई नैतिकता या कुछ ऐसी बातों को ध्यान में नहीं लिया जाता है. Therefore, friend, this is a very strictly what we are going to say that a command is expression of desire by a superior that others must follow. Okay. Now, what is sovereign? संप्रभु कौन होता है? जो सबको सार्वभौम कौन है? Sovereign is the ultimate authority in a state. State. The states are forming their government. Therefore, government is a sovereign. For characteristics is therefore this habitually obeyed by people. Does not obey anyone else source of all laws. Example, parliament per constitution. In practice, constitution is the supreme. This is the basic thing, my dear friend. Therefore, what we are saying, the law which is going to follow, it must be followed by each and every citizen of the country or each and every person. Those, if the persons who are going to be violate these particular rules or laws under such things, the sanction is there. Sanctions for danda. Sanction means penalty or punishment imposed for the disobedience. Essential for enforcement. It is both zaruri. It is very essential. Creates fear and ensures compliance. If such punishment will not be there, sanction will not be there, there will not be a threat on a person. Those are making the crimes or making the disobedience. Under such circumstances, it is very essential. Enforcement must be there. Because of this enforcement, there will be that is creating a fear and ensures compliance in future. That is going to maintain the peace into the society. For example, theft. For theft, imprisonment or fine is there, my dear friend. चोरी करेगा तो जेल है या जुर्माना है. ये उनका sanctions है. Now, what is exactly the fourth point is a duty, कर्तव्य. When a command is issued, it creates a duty to obey. अगर कोई कमांड दिया जाता है, कोई कानून बताया जाता है, तो आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की जाती है. ड्यूटी अराइजेस बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सैंक्शन.
Therefore, friend, what I can say again, the law is nothing but equal to command plus sovereign plus sanction. Thus, law is a binding rule. It is binding on each and everyone. Given by authority. Who is authority? The sovereign is authority. Enforced by the punishment. कैसे किया जाता है? Punishment देके उसको enforce किया जाता है. I can give the further example to you also. For example, traffic law is there, my friend. Government orders wear helmet. सरकार आदेश देती है हेलमेट पहनना अनिवार्य है. तो सोवेरियन क्या होता है? स्टेट होता है. कमांड क्या है? इसमें वेयर हेलमेट, हेलमेट पहनना है. सैंक्शन क्या है? अगर नहीं पहनते तो आपको फाइन है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. देखो फॉर फीचर्स ऑफ ऑस्टिन थ्योरीज की विशेषताएं क्या है? तो लॉ एज अ कमांड. लॉ इज अ बाइंडिंग ऑर्डर, नॉट एडवाइस और मोरल गाइडेंस. इट इज नॉट एडवाइस, इट इज नॉट मोरल गाइडेंस. It is simply a command, a binding order. Once the order is given, you have to follow it by different. That is the उसकी है sovereign authority. Sovereign authority जो supreme है, legally unlimited, source of law. It is a sovereign authority. Then further third point is the sanction based system. Law must have punishment, ensures disobedience. To maintain the obedience, a punishment must be there. This is the sanction based. Further, it is going to be separation of law and morality. Law is equal to what is morality, what ought to be. It means that they are not going to follow this basically about morality. That is a natural law, my dear friend. They are saying that order means order. Law must be followed, which is enforced by the punishment. Ultimately, what will be the conclusion in this? Austin theory present law as command based, authority driven, and sanction enforced separate from morality. It is separate from the morality. Morality नैतिकता से बिल्कुल अलग सा है. Therefore, friend, basic concept of the Austin theory, my dear friend. Ultimately, what I am saying right now, friend, I already given an example for the helmets also. Now, what are the features of Austin theory? उसकी विशेषताएं क्या है? What is saying? Law as a command. Law is a binding order, not advice or moral guidance. I told you sovereign authority. By what are the merits of Austin theory, friends? इसकी विशेषताएं क्या, गुण क्या है? क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. इट इज वेरी क्लियर एंड सिंपल. क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड definition of law. Foundation of legal positivism. Law based on authority, not morality. Influenced by HLA. Hard. Focus on state authority. Explain criminal law, statutory law, and government power. When law is the command of the sovereign, backed by sanction, it means that, according to John Austin, law is not based on morality, naitikta, justice, न्याय और custom, पारंपरिकता, but on authority and a power. एक अथॉरिटी और पावर के पास उसके ऊपर डिपेंड करता है कानून. इस तरह से वो कहते हैं. तो देयरफॉर फ्रेंड, जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून नैतिकता या न्याय पर नहीं बल्कि शक्ति और अधिकार पर आधारित होता है. Therefore, what he said, I told you, my dear friend, the command, I told you, my dear friend, what exactly the command. Command is an expression of desire by a superior that others must follow. आदेश वो इच्छा है जिसे उच्च अधिकारी दूसरों से पालन करवाता है. It is not advice or request. It creates duty, कर्तव्य. Now the second part, what he is going to say right now, explanation in this particular statement, what I told you. Second is the sovereign. Sovereign means a sarvabhaum, some prabhu. Sovereign is the ultimate authority in a state. State is authorized. In our India, central government is authority, or in state, any state will be the authority, the government of that particular. So what are the characteristics of this particular sovereign? Habitually obeyed by the people. Does not obey anyone else. Source of, it is a source of laws, my dear friends. संप्रभु वो है जिसे लोग मानते हैं, हैबिचुअली ओबेड बाय पीपल, और जो किसी और के अधीन नहीं होता है. डज नॉट ओबे एनीवन एल्स. इट इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ लॉ, माय डियर फ्रेंड. फॉर एग्जांपल, इन इंडिया, पार्लियामेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. थर्ड पार्ट, आई टोल्ड यू अबाउट अ सैंक्शन, दंड. सैंक्शन मीन्स पेनल्टी और पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर डिसओबीडियंस. दंड वो सजा है जो कानून तोड़ने पर दी जाती है. Therefore, it is very essential for enforcement. Otherwise, there will be no fear in the mind of the people.
and ensures the compliances. Therefore, it is necessity the person those are disobedience they must be punished by enforcing the punishment or by any consequences. Okay, the punishment may be the criminal punishment, jail, or maybe the fine. My dear, create fear and ensures compliance. ये अपने आप को कंट्रोल रखता है. Now, therefore, friend, fourth point is there a duty, कर्तव्य. When a command is issued, it creates a duty to obey. जब कमांड दिया गया है, कोई कानून बताया गया है, तो आपको ओबे करना है, वो आपका ड्यूटी है. आदेश से पालन करने का कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिकली देयर. ड्यूटी arises between of fear of sanction. Sanction means what? A punishment. Okay. Therefore, कर्तव्य दंड के डर से उत्पन्न होता है. मुझे पनिशमेंट हो जाएगी इसलिए मैं वो कानून को फॉलो करता हूँ, उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ. माय डियर फ्रेंड, सरकार आदेश देती हेलमेट पहनना अनिवार्य है. तो इसमें सोवेरियन कौन है? स्टेट है, सरकार. क्या कमांड है? वेयर हेलमेट. एम आई राइट? कानून क्या है? हेलमेट पहनना है. अगर नहीं पहनते तो सैंक्शन क्या है? दंड क्या है? फाइन या पेनल्टी. दिस इज परफेक्टली फिट्स Austin's definition. I hope that with these two examples you might have understood properly about the Austin's definition properly. I can say a command expresses the will of the sovereign. It is binding, not optional. उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है. इट इज बाइंडिंग टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड. इट क्रिएट्स अ ड्यूटी. आपका कर्तव्य ऑन दिस सब्जेक्ट, आपका कर्तव्य उसके ऊपर लागू करते हैं. Disobedience leads to a sanction. I am repeating again and again. I am trying to explain because you have to explain details about it. Therefore, law is not Austin's theory. What he is saying, as per Austin, the law is not advice. सलाह नहीं है. Law is not request. अनुरोध नहीं है, विनंती नहीं है. Law is not moral guidelines, नैतिक निर्देश. That means Austin is not going to follow the natural law. This is the basic thing. It is compulsory rule backed by force. ये एक बाध्यकारी नियम है जो बल द्वारा लागू होता है. अगर नहीं मानते तो आपके ऊपर एनफोर्समेंट बल या उसके ऊपर आपको फोर्स यूटिलाइज किया जाएगा. तो I told give the example. All laws are commands. All laws are not commands. For example, contract law allows freedom of agreement. This is a criticism about a Austin theory. सभी कानून आदेश नहीं होते, जैसे अनुबंध कानून यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ. Therefore, friend, this is what I would like to tell you specifically. They don't have any legally binding, my dear friends. Further, it is a source of law. कानून का स्रोत होता है. All laws originate from sovereign's commands. Understand my point, my dear friend. सभी कानून सार्वभौम से उत्पन्न होते हैं. Then further, habitual obedience, अदत्तन पालन करना. People regularly obey the sovereign. क्यों करना है? क्योंकि it is formed by the sovereign, my dear friend. This is the basic thing is there. Therefore, I can give the example in Austin's view, King Parliament. आप जानते हो King Supreme है. I told you that this is from the England right now. He's from the England. There's English theory there. A queen is there, my dear friend. She's a supreme. King, queen, like that, my dear friend. They are a supreme. In our country, a parliament is a supreme, my dear friend. Therefore, friend, in modern democracy, sovereignty is divided. Constitutional limit power. The Austin concept is unrealistic today. आधुनिक लोकतंत्र में ये अवधारण अव्यवहारिक है. तो हमारा जो कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये ऑस्टिन थ्योरी को मानता नहीं है, माय डियर फ्रेंड. Theory is saying it is a forcefully the person has to obey the orders. They have to follow, otherwise they will be punished. Now, what type of the punishment will be? The physical imprisonment, that is जेल में डाला जाता है. Monetary means fine दिया जाता है. Therefore, friend, convention, international law is not going to obey the Austin theory, my dear friends. Therefore, friend, hence sanction is not always essential. हमेशा दंड होना चाहिए ये नहीं, क्योंकि नेचुरल लॉ इज आल्सो देयर फ्रेंड. वी हैव टू फॉलो द नेचुरल आल्सो. नैतिकता के हिसाब से होना चाहिए, न्याय के हिसाब से होना चाहिए. Therefore, friend, separation of law and morality. Austin strongly separate law from the morality. कानून और नैतिकता का पृथक्करण किया गया है. वो नैतिकता को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं. What is unjust law is not a law as per the natural law, what it is say, but what he says right now, unjust but still valid law, my dear friend. Once a law is applicable to you, right now, friend, you have to follow as per the sovereign authority, my dear friend. It cannot be changed. It cannot be denied.
That is the basic thing is there, friend. Therefore, friend, this is what exactly we can say. Harsh or unfair law is a still law if enforced by authority. जैसे आप जानते हो कि कई कंट्रीज में अगर कोई चोरी करते उसका हाथ तोड़ा जाता है और किसी का खून करते तो उसे मार दिया जाता है. दिस इज अ हार्श रूल. एज पर द ऑस्टिन theory what it is going to be followed, it has to be obeyed by the every person, my dear friend, and that is going to be enforced by the authority. That is not exactly in democratic country, my dear friend. देखो फ्रेंड, व्हाट कठोर या अन्यायपूर्ण कानूनी मान्य है यदि संप्रभु लागू करते हैं, अगर कोई सोवेरियन लागू करता है तो. Therefore, ensures objective legal analysis, avoids confusion between law and ethics. This is a very important thing, my dear friend. Therefore, it is also criticized again in Indian judiciary, often considers justice, there should be fairness, there must be reasonableness. These are the three important points which are most probably denied by the Austin. You have to understand this, friend. Therefore, Austin का जो कानून है बहुत कठोर है. जो सार्वभौम है, जो सोवेरियन है, जो संप्रभु है, वो जो लागू करेगा उसको आपको फॉलो करना है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. सो लॉ एंड मोरालिटी आर ऑफन इंटरलिंक्ड टुडे. अभी नाउअडेज इट इज देयर. आज कानून और नैतिकता जुड़े हुए हैं. देखो फ्रेंड, Austin's future present law is nothing but it is command based, authority driven, sanction enforced, morally separate system. Therefore, ऑस्टिन के अनुसार कानून एक आदेश आधारित, दंड से लागू और नैतिकता से अलग प्रणाली है. However, modern legal system shows that law is more flexible and complex. This is the criticism of the Austin theory. Includes rights, morality, and constitutional limit. थर्ड पॉइंट इज फ्रेंड, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसलिए यह सिद्धांत आधारभूत है लेकिन पूर्ण नहीं है. मेरिट ऑफ ऑस्टिन थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आई टोल्ड यू माय डियर फ्रेंड. लेकिन ऑस्टिन की एक थ्योरी जो है इसमें थोड़ा सा स्पष्टता और सरलता है, क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, माय डियर फ्रेंड. अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन. दिस डेफिनेशन इज क्लियर, प्रिसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल है. जैसे कि उन्होंने कहा है कि कमांड है, आदेश है, सोवेरिन है और सैंक्शन है, दंड है. तो एनीबडी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर अ रूल इज लॉ और नॉट. फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू माय डियर फ्रेंड, अगर हेलमेट पहनना है तो हेलमेट पहनना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. therefore why this is particularly important, my dear friend. Earlier theory mixed law with morality, religious and customs, my dear. I already explained to you natural law, my dear friend. Religious divine law is there, will is there, my dear friend, that's also, and customs are also there. Therefore, this is nothing but a mixed theory, that this is a confusing theory, what it was saying by the Austin. Therefore, Austin made law separate, scientific concept is different. This help in better understanding and teaching of law. ये कानून को समझना पढ़ने में बहुत सहायक है, बहुत आसान है. Now, what exactly the foundation of legal positivism, उसका विधि प्रत्यक्षवाद का आधार क्या है? ऑस्टिन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द लीगल पॉजिटिविज्म. उसको जनक माना गया है प्रत्यक्षवाद का. क्यों? तो लीगल पॉजिटिविज्म मीन्स लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड अथॉरिटी, नॉट मोरालिटी. कानून तथ्य और सत्ता पर आधारित है, नैतिकता पर नहीं. सत्ता मतलब स्टेट, सोवेरियन, और तथ्य मतलब जो रियलिटी है. ऑस्टिन थ्योरी इन्फ्लुएंस लेटर जस्ट jurist like H.L.A. Hart. H.L.A. Hart जो jurist है, he was very much influenced by them. Why? Then further important for it, developed a scientific approach to the law by the Austin theory with the help of the Austin theory, by H.L.A. Hart with the help of the Austin theory. Developed a scientific approach to law, encourage the study of law as it exists, law as it is. जैसे है वैसे law को applicable करना है. Create a base for modern legal system. It is created a base for a modern legal system. Without Austin, modern legal theory would be incomplete. Therefore, Austin theory is also very much important. Now, what exactly in this particular thing? Austin के बिना आधुनिक विधि शास्त्र अधूरा होता है, मदद करते हैं. Therefore, friend, I can give the example for this particular law. IPC provision, punishment for crimes. Tax laws enforced by the government. This comes according to the Austin theory, my dear friend. This clearly reflects Austin's theory. These are the basic examples I had given. Therefore, explains how law operates in real life. जैसे वैसे लागू हो जाता है.
shows role of coercion and enforcement. आपके ऊपर एक प्रेशर फोर्स क्रिएट करता है और उसको लागू करता है, दंडनीय होता है. Austin theory has important merits. Why? It is a clear and simple definition, strong foundation of legal positivism. क्लियर एंड सिंपल डेफिनेशन जैसे वैसे लागू करना है. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, लीगल पर सोविरेंट फॉलो करना है. एम्फेसाइजेस ऑन द स्टेट अथॉरिटी, स्टेट इज ऑथराइज. क्लियर सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, दोनों से अलग अलग किया गया है. तो ऑस्टिन का सिद्धांत जो है कानून को समझने का एक मजबूत आधार प्रदान करता है. However, despite these merits, it is not complete theory as it ignores. Further, it is criticism, customs, morality in the practice, modern constitutional limits. इसलिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है लेकिन पूर्ण नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो फ्रेंड, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन कमांड थ्योरी, ऑस्टिन के आदेश सिद्धांतों का आलोचना. ऑस्टिन थ्योरी गिवन बाय जॉन ऑस्टिन इज इन्फ्लुएंस्ड बट इनकम्प्लीट एंड अनरियलिस्टिक इन मॉडर्न लीगल सिस्टम. जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत प्रभावशाली है लेकिन आधुनिक संदर्भ में अपूर्ण और अव्यवहारिक है. ऑस्टिन थ्योरी इज नथिंग बट, you always remember the question may be asked English law school, that is Austin's positive theory. Imperative theory, that is a command theory, that why it's called the imperative theory. This is saying, therefore these three nothing but the same theory of the Austin theory. And Austin, keep in the mind, Austin always denied the natural law, my dear friend, divine law. He never followed it, my dear friend. He simply said there must be a command given by the sovereign and it must be followed by the people, must be obeyed by the people. If they will not obey, the sanction will be there, and that sanction is nothing but what we can say a punishment by the jail or otherwise by the fine. Thank you very much, my dear friend. Therefore, the next lecture I will take on a Bentham theory by tomorrow. Thanks a lot.